चलो लिखिए frequency distribution graph. So we have already discussed that we have two types of graph, time series graph and frequency distribution graph. Yesterday कल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? Time series graph and its types. We had two types of time series graph, one variable graph and two or more than two variable graphs. आज हमारा टॉपिक है frequency distribution graph. So टाइम सीरीज ग्राफ में हमने देखा है जब डेटास रिलेट थे विथ सम टाइम पीरियड, दैट वाज टाइम सीरीज ग्राफ. So when datas are related with some time period, whether they are related with some minutes, seconds, hours, or years, or decades, or months, weeks, they are called a time series. That is called a time series. When that series is plotted on graph paper and we get lines, curves, etc., that graph is called a time series graph. So that graph we shows those data which are related with time period. तो आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ेंगे. So यहाँ पर हम ऐसे डेटा उठाएंगे जो टाइम पीरियड के साथ, किसी टाइम के साथ रिलेट नहीं है, बट दे आर रिलेटेड विथ सम अदर, I can say values, or with some other factors. So when data are related not with time period, with some other factors, with some other variables, that is called a frequency distribution graph. You write down those graphs which are not related to any time period, or graphs of those values which are not related to any time period. So those graphs which are not related to any time period is called a frequency distribution graph. So these graphs present the data in the form of a frequency distribution. That is, the values are related, that is the values of a variable or repeated number of times. So thus these graphs present the data in the form of a frequency distribution. So these graphs are present the data. So these graphs present the data in the form of a frequency distribution. In the form of a frequency distribution, that is the values are repeated number of times. Thus we can say that when the values are related, not related with some time period, or they are related with other factors, or they are repeated again and again, so graph of such series is called a frequency distribution graph. So generally we understand that those graphs which are not related to any time period, or whose values are not related with some time period. Important types of such graphs are, ये clear हो गया? Those graphs which are not related to any time period are called a frequency distribution graphs. These graphs present the data in the form of a frequency distribution. That is, the values are repeated number of times. So
these graphs present the data in the form of frequency distribution. That is, the values are repeated number of times. So frequency shows that the values are repeated again and again. Important types of these graphs are: number one, line frequency graph. Number two, histogram. Number three, frequency polygon. Number four, frequency curves. Frequency curves. So the different types of frequency distribution graphs are line frequency graph, histogram, frequency polygon, and frequency curves. So these are the types of. So for our syllabus is concerned, we have histogram, probably frequency polygon, and frequency curves. Line frequency graph is not in our syllabus. Even then we will study it. हम ये पढ़ेंगे, कभी कभी जरूरत आता है, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे इसको भी. तो लिखिए आप फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. Line frequency graph. That graph which present a discrete frequency distribution of data on a graph paper is called a line frequency. That graph which present, जो एक discrete series को present करता है, which present a discrete frequency distribution, discrete frequency distribution of data on a graph paper is called a line frequency graph. Is called a line frequency graph. So that graph which present a discrete frequency distribution of data on a graph paper is called a line frequency graph. In this graph, the values of variable are shown on x-axis and their frequency is distribution. Their frequency is shown on y-axis. So when values are discrete and every value has its frequency, then we plot it on a graph paper. That graph is called a line. So generally this graph is in the form of lines. Atmos is line वुचा. बदिम तो अमुक अख example, एक example में दे दूंगा आपको line frequency graph का. So this is simply definition of line frequency graph. That graph which present a discrete frequency distribution, which present a discrete frequency distribution of data on a graph paper is called a line frequency graph. तो लिखिए question. Following table, शाबाश, following table shows height of students construct a suitable graph or line frequency graph. Height, number of students.
height of students in inches, for example. Inches. 45 inch. Those students whose height is 45 inch. Yiman 45 inch height. Tum chu 5 shuri. They are 5. 50 inch, it is 6. इसी तरह 55 inch, it is 10. 60, it is 15. 65, it is 12. 70, it is 5. उर्दू भी पढ़ा रहे हैं इस वक्त? या सर, सर उर्दू भी पढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब पढ़ो ये क्लास, उसका और कोई टाइम नहीं है। सर उसका 11:30 था, आज 11 पे ही स्टार्ट किया। मुझे फिर टाइम नहीं आता है ना, मुझे फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आपका 12 बजे हो जाएगा, 12th वालों का मैं 11 बजे ले लूंगा, वो कल से वो ठीक रहेगा। सर आपकी टाइमिंग ठीक है, हम उससे खुद बात करेंगे। उर्दू वाले का? सर आपकी टाइमिंग ठीक है, हम खुद से बात करेंगे। या सर, वो कल से 11:30 पे क्लास लेता। 11:30 नहीं फिर लेना है उसे, फिर 11:45 पे लेना है। 40 मिनट मुझे देना है। अगर 11 में स्टार्ट करूंगा, वो है ना मसला है। अगर वो मानेगा ठीक, अगर नहीं तो फिर मैं आपका 12 बजे ले लूंगा, 12th का मैं 11 बजे ले लूंगा। मैं टाइमिंग चेंज करूंगा, 12th वालों का मैं देखूंगा, फिर 11 बजे ले लूंगा। फिर मुझे बताना है। ओके, आज पढ़ लीजिए। अच्छा, ये है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब बनाना है ग्राफ। बनाइए ग्राफ। This is OX shows height, OY shows number of students. Number of students. ये थोड़ा मैं इसका क्रक्स दे दूंगा। हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट 45, तो मैं ऐसे कर दूंगा इससे। अगर 5-5 पे हम करेंगे इसको, है 10-10 पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। OX 50-60 है। 10-10, 30, 40, 50, 60। यहाँ 45 है, यहाँ 55 है, 65, ये है 70, ये है 80। 65, 75, 65, 75, 55, 45 एंड 5, 45 एंड 5 ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 5, 10, 15, 5, 10, 15।
जिनकी 45 हाइट है वो 5 है, यहाँ 45 है वो 5 है, 5 तक लाइन, सीधी लाइन देनी है बस, 5 के सीध में ऊपर, और ये बन गया लाइन ग्राफ। 50 पे 6 है, 50 पे 6 है, शाबाश। 55 पे 10 है, 55 पे 10 है, ओके। 60 पे 15 है, 65 पे 12 है, 70 पे 5 है। So this is simply line frequency graph, ओके। ये है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब उठाइए बेटा आप, ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, उसको बनाना। एक एग्जांपल मैं सैंपल दे दूंगा, सैंपल एग्जांपल। Following table shows income of persons, construct a line frequency graph. Construct a line frequency graph. क्या दिखाना है? इनकम, इनकम and number of persons, इनकम फॉर एग्जांपल जिनका इनकम 50-50 पे 50, 100, 150, 200, 250, 300। फॉर एग्जांपल ये है 10, ये है फॉर एग्जांपल दिस इज 15, दिस इज 35, 200 पे 40 है, ये 5 है, ये 20 है। इन्हें फोन किया। Assalamualaikum. Warnes? So you are talking about it? So it's Sadak your actually? ओके, आप हिस्टोग्राम लिख लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, लिख लिया आपने? इसको खुद बनाना है, इसको खुद बनाना। अब हिस्टोग्राम लिख लीजिए। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। Histogram. So what is histogram? It is graphical representation of frequency distribution of a continuous series is called a histogram. So जब हम continuous series हमारे डेटा होंगे, जब हमारी सीरीज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज होगी और इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होगी, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको दे देंगे, दैट बिकम्स अ हिस्टोग्राम. सो व्हाट इज हिस्टोग्राम? Histogram is graphical representation of a frequency distribution series.
series or continuous series. Frequency distribution series or continuous series. So जब हम continuous series या frequency distribution series को graphical representation दे देंगे, so it is related with continuous series. Thus, histogram is related with continuous series. It is related with continuous series. आप लिखते हो क्या? So it is a presentation of frequencies of values in the form of rectangles. So it is, what is histogram? It is presentation of frequencies of grouped data. Presentation of frequencies of grouped data in the form of rectangles. In the form of rectangles. In the form of rectangles. So in this graph, the width of rectangles are kept according to class interval, and height of rectangles are made according to the frequency. So here in histogram, the width of rectangles, तो इसकी चौड़ाई है, width of rectangles is kept according to the width of rectangles is kept according to class interval, and height of rectangles is kept according to frequency. According to frequency. So different rectangles meet each other from left to right. If the data are in the form of inclusive series, these are first converted into exclusive. So this is very important. If data are in the form of inclusive series, they are converted into exclusive series. So if data are in the form of inclusive series, they are first converted into exclusive series. Now we will construct a histogram. How to construct a histogram? You write down the question. The following table shows marks of students in a class. Construct a histogram. Construct a histogram. Take marks. And we have number of students. Marks and number of students. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60.
We have number of students as, for example, 5. We have 10. We have 15. We have 20. We have 12. We have 8. So this is the data, grouped data. So here data are in the form of grouped data. In the form of groups, it is a continuous series or frequency distribution series, and every group of data have frequency. We have to construct a histogram. कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे ये देखिए आप, बिल्कुल आसान सी बात है, आसान सा काम है, बिल्कुल आएगा समझ। लड़कियों को ज्यादा ये कंस्ट्रक्ट करना आता है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम। ओ वाई, ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स एंड ओ वाई। मार्क्स एक्स एक्सिस पे लगाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पे लगाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स क्या क्या है, 0 to 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। ये हाईएस्ट क्या है, 20 है, 5, 5, 10, 5, 15, तो 5 के वो। 0 to 10, 0 to 10 पर 5 हैं ये बच्चियां, ये स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 5 स्टूडेंट्स हैं 0 to 10 डेटा पे। सो 0 to 10 पे 5 ऐसे बनाना है हिस्टोग्राम। आसान सा है, एक रेक्टेंगल बनानी है, वर्टिकल फॉर्म में एक रेक्टेंगल ये बनाना है। ये है क्या है, 5, यहाँ 5 लिख। 10 to 20 पे 10 है, यही लाइन, ये बार चार्ट की तरह अलग अलग नहीं है, ये दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये 10 है। 20 to 30 पे 15 है, थर्टी टू 40 पे 20 है, 20 है। 40 to 50 पे 12 है, 50 to 60 पे 8 है, 'So this is histogram। ये होता है हिस्टोग्राम। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आई विल गिव यू द होमवर्क। ये हो गया, क्वेश्चन लिख लीजिए। फॉलोइंग टेबल shows income of people construct a histogram। income, number of persons, income and number of persons, income and number of
पर्सन। इनकम क्या क्या है? फॉर एग्जांपल 0 to 100 है, 100 to 200 है। जहां मैंने 10 लगाया हिस्टोग्राम में, ये 10 20 100 तक नहीं, यहाँ 100 लगाना सीधा, यहाँ 200 लगाना, यहाँ 300 लगाना। 100 to 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700। अब number of persons, for example, we have number of persons is 50, it is 60, for example, it is 40, it is 30, it is for example 100। इसमें 10-10 की डिस्ट्रीब्यूशन आप करना, आप 20-20 की भी कर सकते हो। 150, इसी तरह मैं करूंगा यहाँ 80। इसमें आप हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। इस पे हिस्टोग्राम बनाना, एक्स एक्सिस पे इनकम लगाना और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन लगाना। 100, 200, 300, 0 आएगा पहले, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एटसेट्रा। इस तरह इसमें आप 20-20 का भी कर सकते हो, 50-50 का भी कर सकते हो, जो आप मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर मैंने उर्दू सर से बात की। अच्छा, क्या बताया? कल से 12:30 पे क्लास दूंगा। 12:30 पे उसने उसका टाइमिंग चेंज किया। 12:30? यस सर, अब 12:30। यस सर। अब हमारा टाइम ठीक रहे, ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, चलो कोई क्वेश्चन आज? नो सर। हाँ, ये बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, आएगा ना? यस सर। समझ आता, समझ आया ना? ये आसान बनाना है, कोई बड़ा मसला यस नहीं है। सर। हाँ, ये बनाना आप। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं ये उसमें ग्रुप में भी डालता हूँ, ये जो लेक्चर है ना, ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ और ग्रुप में डालता हूँ डेली बेस पे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसमें देखना। ओके सर। ओके ओके, बी एट होम, बी सेफ।